What is happening? प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग. मेरी आवाज साफ आ रही है, राइट? यू आर ऑल्सो एबल टू सी मी एंड ऑल ऑफ दैट क्लियरली, उसमें कोई टेंशन नहीं है. सो व्हाट्स द प्लान? एक्सेप्शनल केमिस्ट्री. मतलब हम लोग या केमिस्ट्री इज एक्सेप्शनल, और केमिस्ट्री में काफी एक्सेप्शंस भी हैं. दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट. मे बी कुछ एक्सेप्शंस आपको पता पता होंगे ऑलरेडी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेरी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं दैट आर assumptions, बट आई एम गोना स्लाइटली कॉल देम एक्सेप्शन एनीवे. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. लाइक वेट, होल्ड ऑन. एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में तो यूजुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बट आई हैव गिवन यू सम नंबर्स ओवर हियर. व्हाट्स दैट अबाउट? यू विल सी वेरी सून. खैर, ऑल गुड, एबल टू सी मी, हियर मी क्लियरली, वो सब चिल है. या शैल वी गेट स्टार्टेड? क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? मेरी आवाज साफ आ रही है, राइट? देयर इज नो टेंशन देयर, ऑल दैट्स गुड. So here's the deal, right? I want you to do these a little quickly. And although nobody knows कि एग्जाम में क्या आएगा, बट केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काफी बार पूछे जाते हैं. और कुछ चीजें आप फॉर्मूला रट लेते हो, एंड समटाइम्स यू फॉरगेट कि उस फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई किया जाए. सो उसके हम लोग बेसिक एक्सप्लोर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस होल एक्सेप्शनल केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग पाई साहब? बहुत पुरानी टी शर्ट है, गर्मी हो गई है बैंगलोर में. व्हाट्स हैपनिंग? ओके साइफर, लेट्स स्टार्ट. पहला सवाल, an interesting one actually. Which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? Now इसमें since this is, I know it's supposed to be JEE main की तैयारी, but हो सकता है एक से ज्यादा भी correct हो incorrect हो, मालूम नहीं. ठीक है, try it out. So you've got four things right now. K less than RB. Now this is talking about the radius. Second one is F less than Cl. यहाँ पे we are talking about electron gain enthalpy. The third one is N less than O, increasing first ionization energy. Ionization energy क्या होती है? आप इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके लिए एनर्जी जो चाहिए, that is ionization energy. Usually you talk about it in terms of metals के बारे में बात करते हैं. Non metals की ionization energy is a weird thing to talk about, but ठीक है, it's an option. Zinc less than copper, increasing atomic size. Now ये radius का लोचा आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं in periodic table, but I think D block में भी इसके concepts कुछ हैं. So think about all of these and let me know which of these is not according to the property listed. मतलब एक तरीके से incorrect option आपको select करना है. Okay, be careful about this. So what do you think? Oh, C. Okay, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो जाए. Hey Arman, what's happening? Good evening. परस, चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं. ठीक है. Oh, you're in 2025. You have a lot of time, bro. Paras, you're good. Uday and 22 are saying C. बाकी लोग एक से ज्यादा सही हो सकते हैं. मैंने आपको शुरुआत में बताया था. ध्यान से देखो, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं. ओके, दिव्या, परस, सब लोग बोल रहे हैं सी. परस, you'll be good, bro. You'll be good. You have a lot of time. Read this book called Zoomdal. Yeah, you'll be good. All right. Om Gupta is also saying C. What about D, by the way? I mean, looks like आप लोगों ने ट्रैप में नहीं आप लोग गिरे, राइट? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है. आई एम गोइंग टू क्विकली ओपन अप दिस ऑसम विंडो जो मिनिमाइज हो गई है. होल्ड ऑन, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द पीरियोडिक टेबल, राइट? दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज ये सब प्रॉपर्टीज कभी याद रहती हैं, कभी याद नहीं रहती हैं. अगर आपने पी ब्लॉक ध्यान से पढ़ा है, देन मे बी आपको याद होगा, बट अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है, देन मे बी यू विल नॉट रिमेंबर दिस. बट दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. That's why we have this beautiful website right over here. Yeah, there you go. Whoa, right over here, right? I'm talking specifically about ionization energy and the whole thing, right? Not ionization, sorry. ये electron की enthalpy बात करें, which is the same as electron affinity. If you देखा जाए तो ये तो मालूम है ना, ये तो NCERT में ही है, NCERT से ही है. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 349 या फिर 350 के आसपास, और इसकी कौन सी है? ये फ्लोरीन उससे कम है, 328. ठीक है, दिस इज डायरेक्ट थियोरी, सो इट्स गुड दैट नोबडी सेड बी. आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि किसी ने बी नहीं बोला. ऑप्शन ए तो ऑब्वियस है. देखो, रुबीडियम नीचे है, पोटेशियम उसके ऊपर है. रुबीडियम नीचे है तो उसका रेडियस ज्यादा ही होगा, देयर इज नो डाउट देयर. बट इफ यू गाइस वांट टू चेक, वी कैन क्विकली क्लिक ऑन रेडियस सी. 243, 265, देयर इज नो डाउट देयर. ऑलराइट, Prachi is saying D as well. Lots of time. All right, okay. C and D both. Rakshita, I see a familiar face here. Rakshita doing both JEE and NEET. आपको कुछ सवाल यहाँ पे repeated दिखेंगे रक्षिता, because you were here in the morning session as well. That's great. C and D both. Yes, Uday. C and D both. Exactly.
Why C and D both? Let's see. Let's see. देखिए, ये थर्ड ऑप्शन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज अ P3 कॉन्फ़िगरेशन. P3 मतलब कि आधा, राइट? 2p3 स्पेसिफिकली, सो इट्स हाफ फिल्ड. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, जोड़ना, दोनों चीज मुश्किल है. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है. व्हाट्स द अदर वन? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट? तो दोनों चीज काफी ज्यादा होगी इसकी. we'll look at that very quickly as compared to oxygen. दोनों चीज की ज्यादा होगी. We can see those numbers as well. अरे कहाँ गया? अभी तो उसको खोला था. No. There you go. Weird. Weirding out of me this. Okay. So electron affinity देखते हैं. Although सवाल में पूछा नहीं गया. Let's just see. नाइट्रोजन की है ही नहीं. नाइट्रोजन is 7. लेकिन बॉस हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. We are good bro. Look at नाइट्रोजन 7. हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. नाइट्रोजन like no boss. We don't want electron. Okay, that's interesting. Ionization energy देखिए 1402 and 1313. You be like, hold on, nitrogen तो N3 minus ion form करता है. Okay, and if you want to look at that, if that doubt is your mind, right? मैं यहाँ पे देख रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की. अगर दूसरा तीसरा देखें तो थिंग्स विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. एंड लकीली और अनलकीली इस पीरियोडिक, आई मीन इस पीरियड टेबल में उस वो फैसिलिटी नहीं है. बट थिंक अबाउट इट एज टू व्हाई इट्स पॉसिबल कि वो 3 माइनस फॉर्म कर सकता है. Anyway, we'll talk about that another time. Abhi ke liye, let's focus on this third option and why it is incorrect. We have just now proved कि nitrogen should be greater than oxygen. What about the last one? ये D block में एक graph था. Do you remember this? It looks something like this. Around D7, D8, ये होता था. There's a point of inflection and it rises back up again. There's a minima and it goes back up. That's because क्यों है ये, by the way? Why is it? Why does it happen? Can someone tell me on the chat क्यों होता है? You figured this question out. Lovely. बहुत अच्छा है. आप लोग इस ट्रैप में नहीं पड़े. Both these options are incorrect. But why? Sure, Z effective बढ़ता है, इसलिए रेडियस कम होना चाहिए. But there is an opposing factor. Electrons एक दूसरे को धक्का देते हैं. They don't like each other so much. इसीलिए the size starts increasing. And that's because there are a lot of D electrons. There are 7, 8, 9, 10. बहुत electrons है. Okay? All right. Sweet, sweet, sweet. Hey, good evening, Shlok. What's happening? All right, D is correct. C is also incorrect. Yeah, great. Speak louder. Okay. Somebody was saying that in the morning as well. क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है साफ? Is there some problem with my voice? My voice is low. Everyone's saying that. Okay, cool. Hold on. Let me fix this mic. Is that better? I think it's because I wear a different shirt, so I've placed the mic in a different way. Hold on. Is that better? Is that better now? Yeah? Oh, you're still saying voice is low? Let me check the gain on the mic. Microphone. कुछ बदला तो है नहीं मैंने. Microphone voice is low, voice is a lot of saying that. I didn't change anything. Voice speed, no, not this. Gosh, this guy, why do they keep changing the systems on Windows? It is so annoying. Sound recorder, everything other than what I need, मुझे मिल रहा है. Literally everything other than what I need. Okay, great. Sound system, listen, levels, microphone boost, plus 10 dB. This is going to get very loud. Okay, just let me know. Hold on. Is this better now or is it extremely loud now? Is it better? Hold on. I've done that. I'm also going to increase the boost now. Okay. Whoa. Okay. Is that better? Hello? Yeah, I think this should be good, right? I've changed the boost. I've changed the microphone levels as well. Is that all right? Okay. Shall we get back to it? All right. What according to me is a very good score in JEE main? I think all scores are good in JEE main. जितना तुम पढ़ाई करोगे उतना ही स्कोर आएगा, है ना? तो यार आई एम अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट. यार वो फिलॉसफी मेरे लिए बिल्कुल, आई हैव कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, तो स्कोर वोर तो आप पे डिपेंड करता है. मेरा जॉब है आपको जो है टू गाइड यू टू योर बेस्ट कैपेसिटी, राइट? एंड द फोकस स्कोर एंड ऑल आप देख लोगे ना. प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट जो आएगा उसका वील सी व्हाट टू डू. Anyway, this is a Telegram group that I maintain. If you guys want, you can join it. JEE is on 1st Feb. That's awesome, Dream Dude. That's great. All right, let's go ahead. Awaz Safari, all good. We spent a lot of time on the first question, but that's okay. Aditya Vikram, what's up? Minimum what? I think you need 90 percentile clear करने के लिए, है ना उदय? 90% है, वो तो भगवद गीता में लिखा है ना अरमान. I strongly believe in that. You've got to focus on the process. Result तो कभी हाथ में होता ही नहीं है. Nobody can promise you any result. Man proposes, God disposes. Let's go on to the next question. ये वाला भी interesting है. Among water, H2S, H2SE and H2TE, the one with the highest boiling point is what? Highest मतलब सबसे ज्यादा boiling point इन सब में से किसका होगा? Wow. Okay. This is kind of easy, but also could be tricky.
इट्स वेरी इजी अगर आप ज्यादा मत सोचो. अगर आप थोड़ा सोचोगे ना, बी लाइक एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है. सो या, लेट्स ट्राई दिस आउट. You scored 220. Wow, bro. That's great. That's great. 22. That's good to know. 22 scored 220. That's amazing. That's an insane score. Hey, Nidhi, long time. How you doing? Pai Patel ji. No, no. Pai Sahab. Pai Sahab. Pai Sahab. That's your name. Pai Sahab says A. Arman is on A as well. Divya is on water. All right. Dream, I don't think that's enough. I don't think you need 90 percentile, not 90 marks. 90 percentile for a general category person. Right? There are different cutoffs for different kind of background. जो भी आपका है वो आप देख लेना, Dream dude. You can check that out, right? I'm not good at that, sadly. Yeah, I know that's what the regular coaching thing is. ये लाओ, ये करो, वो होगा. I've never been that kind of a person. So you can check that out online. Maybe I'll bring you those stats in a couple of days' time if they ask us to. All right, a lot of you saying A. Shlok also saying A. Rakshita is on A. Pradum Giri is also on A. Dream also on A. Everyone's on A. Okay. Pani hi hai because of hydrogen bonding. Now, what could get confusing is H2TE because of high molecular weight. That's the confusing part. क्योंकि देखो, जैसे molecular weight बढ़ता है, it could get, that's a valid point. Boiling point बढ़ सकता है, but इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाता है, कम एंड इवन मोर, राइट. ओ, सबसे कम यहां पे. या इफ यू वांट टू लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, वी कैन क्विकली डू दैट. आई नो यू नो द आंसर टू दिस, आपने इसको कहीं पे देखा होगा मे बी, बट क्यों, व्हाई इज इट दैट वी डोंट लुक एट टेलीरियम टू, व्हाई नॉट. काफी भारी है, टेलीरियम कुड बी लाइक ऑल द वे टू द बॉटम, व्हाई नॉट. Look at this. कहां है टेलीरियम. टेलीरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 2.1 है, which is incredibly low. राइट, बोरॉन के आसपास है, incredibly low. Look at oxygen, it's 3.44. 3.44 versus 2.1. It's like night and day. ठीक है, मतलब somewhere between phosphorus and boron है टेलीरियम की this thing. So yeah, that's literally night and day का difference. खैर, just wanted to get you guys a feel for what's happening here. Besides, आपको इसके आंसर तो ऑलरेडी मे भी मालूम होंगे, राइट. पानी ही सबसे ज्यादा होता है, इस पे सवाल भी आ चुके हैं. So see, technically, questions like this could be asked from P block 2, right? Because students have been asking me P block से क्या सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, right? So इस टाइप के सवाल आ सकते हैं. All right, cool. Water, yes, awesome. उदय पटेल, यार ये सब आप गूगल कर सकते हो, right? You don't need me to tell you these things. I don't know them also. मुझे पता तो बता देता मैं. I don't know them. I don't get into it. Yeah, that's my philosophy in doing things. आप पता करना चाहते हो, look it up online. Feel free to do that. And let's not talk about that. Focus on today's thing, which is exceptional chemistry. Aluminium is usually found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and +3 oxidation states. This is due to what? Diagonal relationship, inert pair effect, lattice structure, or lanthanide contraction. अगर ये theory नहीं पढ़ी है, then this question could confuse you. But if you have studied this theory, you'll answer it in like 10 seconds flat. You're like, yes, I've seen that. I know what that is, right? But if you haven't studied it, you'll be like, wait a minute. Thallium मतलब lanthanide कुछ हो सकता है क्योंकि lanthanoids होते हैं. I'll show you where thallium is. Hold on, right? Where is thallium on this awesome periodic table? Thallium is literally यहाँ पे, right? It's after all the 4F1s. And aluminium is all the way on the top. So you could get confused. But अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, इंडियम और थैलियम के बीच में एक चीज है कि इंडियम वन ऑफ देम में +1 ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरे में +3 ज्यादा स्टेबल होता है. सिमिलरली SN और PB में एक में +2 +4 होता है. दिस आइडिया इज, yes, all of you got this correct. Easy questions, right? बहुत simple questions है, सही है. But this is what it is. Yeah, salt analysis is easy. All right. Yeah. Salt analysis पढ़ने के लिए अगर आपने लैब में किया तब लाइफ बहुत आसान है, पर अगर लैब में नहीं किया तब तो मुश्किल होती है. What's up, ETR? Long time. Van der Waals force increase mass. Exactly. केमिस्ट्री में टारगेट 90+ है ब्रो. लवली. हाँ, आदित्य विक्रम, अब अचीव तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पेपर. नो, अगर आपके पेपर में सॉल्ट एनालिसिस जबरदस्ती 2 सवाल पूछ लिए, देन यू आर लाइक, ब्रो व्हाट इज दिस. सो सॉल्ट एनालिसिस चाहो तो कर सकते हो. आई मीन दैट्स वन ऑफ दोस चैप्टर्स. सी, इफ यू हैव डन सॉल्ट एनालिसिस बारे में ना स्पेसिफिकली, आई विल टेल यू द प्रीरेक्विजिट्स. आपको जनरल आइडिया होना चाहिए about inorganic chemistry, and specifically you have to be comfortable with ionic equilibrium for cation का analysis.
दोज आर टू थिंग्स फॉर एनायन कैटायन। तीसरी चीज फ्लेम टेस्ट, बस यही तो है। वो बोरैक्स बीट टेस्ट वो सब भी है, बट आई हैवंट सीन क्वेश्चंस आस्क्ड दैट। अगर आ गया सवाल तो छोड़ देना यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए, इजी वन। श्लोक 22, दिव्या, उदय, ऐश्वर्या, ड्रीम डूड, अरमान, and yeah, inert perfect, pi sahab are all saying all right, lovely, yeah, easy, he solved easy hai, yes, absolutely. All right, let's take it up a notch, right? थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, थोड़ा सा। युवराज यहाँ नहीं है ना, युवराज ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, so has Rakshita. खैर, this is a build up question. The acid Ha has a Ka of 1 into 10 power minus 1. If 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, what is the percentage of acid dissociated at equilibrium? What's happening? इसको कैसे करेंगे आप? Is there a formula that you can use directly? या फिर आपको ध्यान से करना है? That's a hint right there. You got a weak acid, उसका Ka की वैल्यू दी गई है। By the way, strong acid की Ka की वैल्यू क्या होती है? Have you guys paid attention? थोड़ा बहुत आइडिया है? Strong acid की Ka की वैल्यू क्या होती है? Let me know in the chat, and then you'll have an idea of how to proceed with this question. वो हमने P block में देखा, just approximate idea. You don't have to know it inside, just approximate ideas. इस टाइम अनटच चैप्टर्स करना चाहिए। आदित्य विक्रम यार, सब टू यू मैन। मैं पर्सनली तो नहीं करता, मेरे हिसाब से तो फोकस उसी पे करना चाहिए जिसपे स्ट्रेंथ है। और अभी तो 10 दिन बचे ना, तो चिल करो। 10 दिन नहीं, कुछ लोग के 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, चिल लाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मेक श्योर हेल्थ इज गुड, रिलैक्स, ठीक है। कीप डूइंग दीज टाइम पास सेशंस विद टीचर्स लाइक दिस। अगर थोड़ा ज्यादा इंटेंस सेशन उसको मत करो, कोई जरूरत नहीं है, चिल करो भी लाइफ में। लेस देन 1 होता है, ड्रीम डूड सेज 1, लेस देन 1, 1%। पाई साहब सेइंग 1%, 1 क्या है? परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड, परसेंटेज आप बता रहे हो, अल्फा बता रहे हो? व्हाट आर यू टेलिंग मी द वैल्यू ऑफ अल्फा और परसेंटेज? क्या? अरे 100 नहीं, इनटू 100 ना, इनटू 100 अगर करोगे आप, अल्फा इंटू 100, दैट गिव्स यू द परसेंटेज। 1 आ रहा है आप लोग का, 1 से क्या मतलब है इसका? 1, व्हाट इज 1? थोड़ा सोच के बताओ। देखो, मैंने एक हिंट दिया था। व्हाट वाज माय हिंट? माय हिंट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड की Ka की वैल्यू क्या होती है? 1%? आर यू श्योर? कैसे किया आप लोगों ने? हाउ डू यू गाइस गेट 1%? थोड़ा सोच के मुझे बताइए। प्रॉपर 1%? अच्छा, इंटरेस्टिंग। अल्फा इज 1। दिव्या ने एक चीज बोली है। दिव्या, अल्फा इज 1, सोचो, अल्फा इज 1 का मतलब क्या होता है? अल्फा इज 1 का मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, है ना। अल्फा इज 1 का मतलब अगर मैं 1 मोल Ha डालूं तो इट विल गिव मी 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ A माइनस। 100% पाई साहब बोल रहे हैं। यश व्हाट्सअप, ज्यादा हो गया ये तो। डजंट मेक सेंस ना, दिस डज नॉट मेक सेंस। कैसे हो सकता है ये? अल्फा 1 कैसे हो सकता है? देखो, ओके, नाउ लुक एट दिस। यही तो हम एक्सेप्शन आपको बता रहे थे। आप लोग एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं सीधे तरीके से करो, आप लोग एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। श्लोक कहां गया? बहुत शांत हो गया श्लोक। बाकी लोग कहां गए हु वर आंसरिंग पहले? खैर, ओके, फॉर द sake of theatrics, I will show you the value of Ka for HCl, okay, and Ka for Hi. Let's find out क्या होता है Hi Ka value. Are you sure you can use that? Irrational 22 बोल रहा है सीधे irrational. अच्छा भाई साहब, what is your irrational? Okay. अरे यार, ये क्या हो रहा है ये? ओके ओके, सोक्रेटिक खुला, ठीक है, फ्री में पब्लिसिटी हम लोग दे रहे हैं सोक्रेटिक को। ये देखो, वैसे एनसीईआरटी में है ये चीज, आई जस्ट गॉट लेजी एंड आई गूगल्ड इट। देखो यार, pKa of HCl is 10 is -7, मतलब Ka is 10 पावर 7। ये एनसीईआरटी में भी मैंने जबरदस्ती सोक्रेटिक खोला, इतनी देर में हम लोग एनसीईआरटी भी खोल सकते थे। So what am I trying to get at? I'm trying to get at the fact that this does not make sense. Alpha cannot be equal to 1 because for alpha to be equal to 1, Ka value is approximately 10 power 7. अब सोचो, थोड़ा सोचना चाहते हो, थोड़ा सोच लो। अरमान, I understand the equation, but are you sure कि वो equation use कर सकते हैं?
मैं क्या के अंडर रूट के बाई सी, कैन यू यूज दैट इक्वेशन? व्हाट इज द यूजुअल वे ऑफ डूइंग इट? व्हाट ऑल ऑफ यू आर डूइंग इज एन एक्सेप्शन. 22 आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट थोड़ा ध्यान से करो, इरेशनल नहीं है, रैशनल है. रिमेंबर इन द स्टार्टिंग आई गेव यू सम वैल्यूज, राइट? ये लो, ये वैल्यूज है, फिर से ये देखो, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 वैल्यू, सबकी वैल्यू यहां दी हुई है. दैट इज अ हिंट. ठीक है, लेट अस गेट बैक टू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. युवराज अगर फिर से देखिएगा, विल बी ही इज गोना बी लाफिंग because युवराज figured it out extremely quickly in the last time when we did it with the NEET folks. Exactly, अरमान, how is that possible? अल्फा 1 नहीं हो सकता है. देखो मैं थोड़ा सोच के बता. हाँ श्लोक, लवली, दैट्स द राइट आंसर. श्लोक ने कैलकुलेटर से किया लग रहा है, और प्रॉपरली किया. मैंने जो थोड़ा स्कैम तरीका बोला था उससे करता तो 60% आता, बट श्लोक ने प्रॉपरली किया तो उसको 56.5. यस श्लोक, थैंक यू, दैट्स द राइट आंसर. नाउ हाउ डिड श्लोक गेट दैट आंसर? श्लोक, डू यू वांट टू टेल योर फ्रेंड्स? देखो, अगर हम लोग इस तरीके से करते, जो तरीका आप लोग बोल रहे हैं कि हमने ये लिख दिया कि c into alpha square is equal to ka, if we do this we get a ridiculous number which is alpha is equal to 1. like है, alpha तो 1 नहीं हो सकता है, because alpha will be 1 when k is 10 power 7, but k is only 10 power minus 1, बहुत कम है. it is literally 10 power 8 times lower than what it should be, so alpha cannot be 1. so हमने क्या गड़बड़ी की? हमने गड़बड़ी की यहाँ पे, we assume that 1 minus alpha is equal to 1, which is not correct. अगर 1 minus alpha is equal to 1, then आपको जो वैल्यू मिली 1 की, उसका तो मतलब ही नहीं है. you get 1 minus alpha which is 0. है ना? you are basically dividing by 0. that is what it looks like. खैर, that is the quick issue with that. ठीक है. Anyway, I gave you numbers like this ताकि ये सब कैंसिल हो जाए. जब ये कैंसिल हो जाएगा, you will get a nice neat quadratic equation. उसको आप डिस्क्रिमिनेट तरीके से करिए, जैसा करना चाहे. फैक्टराइज तो इसको नहीं कर सकते हो, -b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a से करिए, and you will get these values right here. okay, you will get these things right here. cool, सब ठीक है? all good? yeah, all right. we can't approximate. exactly Shlok, exactly. Yash, good job bro. yeah, 60% if we take 2.2 as √5. बिल्कुल सही. हाँ यश, good job यश. KA 0.0007 नहीं, K तो मैंने 10 पावर -1 लिखा है ना यहाँ पे, देखो. हाँ अरमान, ठीक है, आप समझ गए ना? ठीक है, ग्रेट. ऑल राइट, तो ये -4 -1 इंटू क्या है यहाँ पे, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? A इंटू C क्या है? -1 है, 4, इट शुड बी इंटू. ठीक है, -1 इंटू 1 यहाँ पे है, इंटू हो जाएगा, सो यू गेट √5. कूल. so √5 is simply this, you get the value of alpha to be 60%. Bishop Cottons. yeah, Vinay is from Bishop Cottons. Vinay, who heads our content team. And now product and other stuff as well. Awesome, 60%. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन था? एक्सेप्शन वो है जो आप लोग यूजुअली करते हैं. यूजुअली आप लोग ये करते हैं कि C alpha square is equal to K. Now this is only valid. There are 2 points when this is valid. First, you have to have a mono basic or a mono acidic compound. ठीक है, एसिड या बेस, दूसरी मतलब एक ही निकलना चाहिए, and that is fine. ये वाला पार्ट ठीक है, right? That's okay, doesn't matter so much. The second point, which is more important, is that this is only valid if you're approximating 1 minus alpha is almost equal to 1, which means कि alpha is less than 0.05 or less than 5%, है ना? तभी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको नहीं कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द यूजुअल. इसमें जो मैंने किया वो एक्सेप्शन नहीं था, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं दैट इज एन assumption / एक्सेप्शन. ठीक है, ऑल राइट, गुड जॉब. ऑल राइट, वाओ अरमान, I guess whenever Baiju starts hiring again, I'll tell you for sure. You will also take class. That's lovely. हाँ, जैसे ही Baiju फिर से hiring शुरू करता है, मैं आपको बताऊंगा. If the equilibrium for reaction of HCN, अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. देखो, मजेदार सवाल है. Who thunk, हाँ? Who would have thunk कि हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के सवाल करेंगे आज एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में. If the equilibrium for reaction of HCN with NaOH is 10 power 10, then calculate pH of 10 power -3 molar NaCN solution of 25 at. Sorry, ये मैंने लास्ट मिनट ऐड किया था तो ऑफ हो गया. एट होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है,
इसको try करो. So Skiller asked me this question this morning. Skiller from Discord. I don't know if they're watching this or not. I should probably tell them, hey, that I'm solving your question on this thing. We had quite a bit of a this thing about it. ऐसे करें वैसे करें. I'm like, no, bro, this is like fine. And they were like, no, maybe this, maybe that. Anyway, how do you do this one? I'm not saying all this just to freak you out. I'm serious. Like, this was a discussion I had just this morning. So this was a last minute addition to this amazing class. कि मैं सोचा इसको ऐड कर लेते हैं. मजेदार सवाल है. आप लोग सोच के बताओ, मजेदार लग रहा है, कैसा लग रहा है? Hold on. Hey, so this question that you asked me this morning, I'm solving it right now on the live session. If you want, you can come check it out. 10.5. Okay. कैसे किया 10.5? Can you tell me your process? Hydrolysis. Okay. Okay. ठीक है. Hydrolysis. Okay. ठीक है. Two folks are saying two things. Arman बोल रहा है 10.5 and Shlok is saying hydrolysis. Are the two things linked? How do you start this question? What is equilibrium constant? Aditya Vikram asking the most beautiful questions. 22 also asking good question. ठीक है. Let's go. I'll help you out with this one. Yeah. HCN plus NaOH. This is neutralization. ठीक है. ठीक है. All right. Why are we writing root of 10 power minus 7? Sorry, Arman. अब मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा हेल्प करिए समझने में. Won't it be KH into C? KH by C. KH by C. Okay. KH by C. हाँ, ठीक है. Let's see. Let's see the KH वाला business. Okay. Wow. He's on fire, huh? सही है. Hydrolysis हो रहा है. Yes, Parveen. All right. So इसका जो reverse reaction है, this is basically, now this is what I want, right? I have NaCN. NaCN को मैं पानी में डालूं तो ये होता है. Now notice this carefully. This reaction is the reverse of this. Would you look at that? This reaction is the reverse of the first reaction. मतलब इसके K की वैल्यू होगी 10 power minus 10. What is this? That is HCN times OH minus by CN minus. Now if you do the whole business, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C into 1 minus alpha. Here I go C alpha. Here I go C alpha. Give me a thumbs up if so far we are all right. From here, can you guys solve it? Thanks, Arman. That's lovely. Badhiya. This is going crazy, huh? These H things. I am always scared to write KH and H. इसलिए मैं K के ही टर्म में करता हूँ. मुझे कंफ्यूजन आता है भाई, KH कहाँ से आ गया, क्या मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है उससे. KH क्या होता है, KB क्या होता है. तो मेरी बस आदत है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लें. वो फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते. आपने भी जो किया बिल्कुल सही ही किया. ठीक है. Akashian. Wow, that's an interesting name. Nah, yaar, I just teach on the YouTube channel. See, that's the formula I'm scared of. Exactly. वो वाला जो आपने लिखा ना लास्ट में, वो फॉर्मूला मुझे डरावना लगता है. मैं उसको छूता नहीं हूँ. I don't touch that with a 10-foot pole. But okay. Thanks, bro. Thanks so much for all the detailed thing. Thank you. Are you guys following जो मैंने अभी तक लिखा है यहाँ पे? What I've written so far, is that good? श्लोक कहाँ गए भाई? 22 and Aditya Vikram, where are you guys? What's happening? Hey Payal, what's happening? So what do we do next? Pai sahab? Okay, cool. But here is my concern, or whatever you want to call it. है ना? So if I do this business, I get C square into alpha square time divided by C into 1 minus alpha. So इसके बाद क्या करें? What do we do here? इधर ही है. Okay. 10.5. Okay. What do we do from here? इसके बाद हम लोग क्या करें? So the formula thing Arman said on top, right? Let me just scroll up to what Arman said. He's saying root of 10 power minus 7. अब यहाँ पे तो अजीब चीज हो रही है. Yeah, he's pi sahab for life. That's what he is. So if you get KH to आपने alpha बताया, right? 10 power minus 7, root of 10 power minus 7 will be alpha. Is that what you're saying? Because see, if I solve this, now I don't need alpha, I need C alpha. C alpha is OH, but okay, if you want to do alpha, we can get alpha. Here the approximation is good. Alpha square is going to be equal to 10 power minus 10 divided by 10 power minus 3, which is 10 power minus 7. So alpha is under root 10 power minus 7.
C alpha is 10 power minus 3 into under root 10 power minus 7. Okay, so C square alpha square is going to be equal to 10 power minus 13. That gives me C alpha to be equal to 10 power minus 6.5. That gives me POH to be equal to 6.5. That gives me pH to be 7.5. अब आप लोग को 10.5 कहां से आ रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा. थोड़ा जल्दी हो गया तो बताना. I'll do the same thing slowly. या 22, मुझे भी तो यही लगा, है ना अरमान. अंडर रूट KH/C, मैंने भी वही किया, राइट. ये जो आप बोल रहे हो KH, मैं उसको बस K बुला रहा हूं बिकॉज ठीक है, इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अरमान के जरूर लिख देते हैं KH/C. ये तो अल्फा हुआ ना, है ना. जो आप बोल रहे हैं अरमान, अल्फा हो गया, है ना. तो आप लोगों को 10.5 कैसे मिला, यही मैं पूछना चाहता था. 10.5 कैसे मिला? आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. मैं कोई फैंसी फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूं. फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? सब इंपॉर्टेंट है यार. हम लोग फ्लो में जा रहे हैं. यू आर वेरी स्केर्ड ऑफ मी. नहीं पायल, कोई डरने की जरूरत नहीं है. पायल, डू व्हाट यू कैन, व्हाट यू आर कॉन्फिडेंट विद. जिस चीज में डाउट है ना, उसको छोड़ दो. दैट इज द मेन थिंग. So if a question like this comes that scares you, leave it. But in the interest of exceptions, हम लोग उसको कर रहे हैं. अब confused. हाँ, तो मैं समझ नहीं पाया अरमान, आपने सब चीज ऊपर बिल्कुल सही लिखी, बट मैं ये समझ नहीं पाया फिर आंसर हम लोग का अलग कैसे आ रहा है. आपने जो ऊपर लिखा है, अग्री विद ऑल ऑफ इट, इज जस्ट दैट एच के बजाय मैं अल्फा यूज किया. ठीक है, आप एच बोल रहे हो, मैं अल्फा बोल रहा हूं. इट इज द सेम थिंग, इट डजंट मैटर सो मच, है ना. फिर लास्ट में आपने फॉर्मूला लिखा. अब उस फॉर्मूला में, फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला राइट, इज दैट फॉर्मूला राइट, आई डोंट, पता नहीं. फॉर्मूला हो सकता है सही होगा, सही होगा. फिजिकल केमिस्ट्री. ऑलराइट, डिवाइड गलत किया. अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ी की. अच्छा, won't we consider OH minus from water? Very interesting, very interesting. OH minus from water. कर सकते हैं OH minus from water because C alpha is okay. हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं. अच्छा अरमान, ठीक है, कूल, नो प्रॉब्लम, गुड जॉब, गुड जॉब. 7.5 आता है. हाँ यार, यू आर राइट, इट कुड गेट अ लिटिल मोर अनोइंग. मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके बता दिया. बट इफ यू गो एंड कंसिडर दिस, C alpha is 10 power minus 6.5 ना, तो 10 power minus 7 plus 10 power minus 6.5 हो जाएगा, राइट. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. आई मीन इफ वी आर अ लिटिल चीप अबाउट इट, अगर हम लोग थोड़ा सस्ता तरीका लेते हैं, देन इट इज दिस. इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, देन इट गेट्स अ लिटिल मोर हेरी. ठीक है पायल, इट्स ओके यार, डोंट वरी अबाउट इट. 22 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, वो भी आएगा. या सो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू स्टॉप डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि द रीजन आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप, क्योंकि व्हेन स्किलर ब्रॉट इट अप, सब जगह इंटरनेट पे आंसर 10.5 लिखा था. आई स्पेंड हाफ एन आवर दिस सेइंग, भाई 10.5 कैसे आएगा, कैसे आएगा 10.5. सो एनीवे, आई वांटेड टू tell you the answer, it cannot be 10.5. I don't know where 10.5. It's somewhere around, 7.5 or maybe 8 or 8, something like that. Yeah, 7.5 या 8 उसके आसपास है. खैर, anyway, उल्टा गिर रहा है कॉन्फिडेंस. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, वॉच माय पीवाईक्यू सेशंस, वॉच द पीवाईक्यू सेशंस. आज हम लोग एक्सेप्शनल चीजें कर रहे हैं, तो उससे मैं डराना नहीं चाहता आपको. ठीक है, बट हियर इज एन एक और मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है. या गो अहेड, बोलिए श्लोक, बोलिए श्लोक. You guys can join Telegram if you want. Go ahead. Excuse me, इतना फॉर्मल का हो रहा है श्लोक? All good. Slope of solid liquid interface for water and CO2 respectively are. I know theoretically ये सवाल maybe JEE main में ना आए, but it's a beautiful idea that I wanted to discuss with you anyway, because we are having fun, right? Now it's like JEE pass में है, I know, but we are doing exception in chemistry. So this is generally an exception in chemistry. श्लोक क्या हुआ, बोल यार. For some reason, I'm not getting all your chat. Okay, I've clicked top chat. I don't know, keeps changing. YouTube keeps doing funny things. If we consider HCN as weak acid and NaOH is quite a strong base, so shouldn't pH be quite higher? I understand what you're saying, right? Strong base and weak acid. So it should be weak acid is strong base. Yeah. So the it should be, but the values are not right. उस सवाल में values सही नहीं है. ठीक है? Actual Ka value HCN
HCN का Ka वैल्यू 10 पावर माइनस 10, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग। हमने हमने लिया कि Kb टू बी 10 पावर माइनस 10, है ना, मतलब बेसिकली KH बाई सॉरी KW बाई Ka, वो हमने लिया टू बी 10 पावर माइनस 10, तो वैल्यूज उस क्वेश्चन में गलत थी, ठीक है, बट दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, सो इसलिए मैंने आपको भी वही सवाल दे दिया, ठीक है। गुड, वेरी गुड इंट्यूशन श्लोक, एक्चुअल वैल्यूज अलग है। या व्हाट्स हैपनिंग Kratik, okay, B and B, yeah, exactly. Don't worry about the HCN thing. I should have just made it HA, I think. मैंने वो सवाल एज इट इज ले लिया बिकॉज वो सवाल बहुत जगह इंटरनेट पे था। Dude, does this happen to you guys? My Windows machine just like my desktop just turned on its own. It's very freaky. और ये ऑफिस का लैपटॉप भी sometimes I hibernate a lot. I mean, I also hibernate. I make my laptop and computer hibernate. It just turned on. It was freaky, like लाल light और blue. Man, that was scary as heck. Anyway, that was freaky, bro. What is happening? Does that happen to you guys? कि आपका computer just randomly just starts up? Anyway, I'll look at that later. खैर, इसमें सब लोग बोल रहे हैं B. 22 बोल रहा है B. Arman बोल रहा है B. Kratik is just saying sir. Okay. Hi Manjula. What do the rest of you guys think? बाकी लोग क्या लगता है? Bro, that is so freaky. I mean, when your computer just turns on without you doing anything and you watch horror movies, it's not a fun thing. It's not a fun thing. Hack. Yeah, hack. Oh man, that's funny. 7 किधर होता है इधर? अबे ये क्या हो रहा है? No. Oh, hand eye coordination. खैर छोड़ो, लाइट बंद कर दी एटलीस्ट। ब्राइट रेड लाइट इन माय फेस। Oh wow, Zern, that's lovely. Ghost, yeah, sure. You can join this if you like. So couple of you saying B. बाकी लोग क्या हो गया? सब लोग भाग गए या सो गए या फिर मुश्किल लग रहा है? Okay, let me do this part a little bit quickly. The basics जो आप लोग 8th, 9th, 10th में already पढ़ चुके हैं. If you go from a solid to a liquid to a gas, you need to heat it. मतलब टेम्परेचर कुछ फंक्शन है यहाँ पे, और अगर उल्टा जाते हो, you can either cool it or I can increase the pressure, right? So maybe I can form a P versus T graph. This is my logic, very crude logic to solve this question. Solid liquid interface मतलब कि solid liquid gas तीनों होंगे, but if you want to do this, I can either do a PT curve or I can do a PV curve, right? That's what I've got to do. So I'm going to take a leap of faith and I'm going to do this PT curve over here, ठीक है? अब PT curve दो तरीके का दिख सकता है. It can be either this or this, 1 and 2. Which one is water? Which one is CO2? ये has to do with anomalous expansion of water जो आप पढ़ रहे हैं 8th grade से 9th grade में, depends on where you are at. Okay. So to understand this, look, if I increase the temperature, कहाँ है ये? देखो, ये है gas, ये है solid, ये है liquid, ठीक है? Now say I have this temperature somewhere over here, right? इस टेम्परेचर पे पहले था सॉलिड, फिर हो गया लिक्विड और फिर हो गया गैस. सो टेम्परेचर इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? टेम्परेचर फिर भी चिल है. अब प्रेशर देखो भाई साहब क्या करते हैं. प्रेशर इज लिटिल मेस्ड अप. सी, आई इंक्रीज प्रेशर एंड दिस ऑरेंज लाइन यहां पे भी लिक्विड है, ठीक है? दिस इज वियर्ड. प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड बन जा रहा है. लाइक व्हाट? दैट्स क्रेजी एंड दैट्स व्हाट वाटर इज ऑल अबाउट. पानी में ये कर सकते हो, okay? That's how you can melt ice, by the way. That's a very cool way to melt ice. You increase the pressure, melt हो जाएंगे भाई साहब. Usually pressure increase करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए ना. वॉल्यूम कम क्यों होगा? The density of water is highest at 4 degrees Celsius, which is 1 gram per cc. Anomalous expansion. That is why पानी का negative slope होता है, CO2 का positive slope होता है. Usually you would learn about this in isotherms as well. Isotherm में भी ये होता है कि ये कर्व इज दिस वे फॉर एंगल आइसोथर्म पहले से अभी नहीं है, बट दैट्स कूल. दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट वाटर. और किसी भी सब्सटेंस में ऐसा नहीं है. आई डोंट नो ऑफ एनी सब्सटेंस. इफ यू डिस्कवर दैट्स ग्रेट, बट इसका स्लोप नेगेटिव होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, भाई साहब सॉलिड बनने के बजाय लिक्विड बन जाते हैं, व्हिच इज क्रेजी. एंड ऑन द अदर हैंड, सी हियर, इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, इट मेक्स सेंस. पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. इट मेक्स सेंस. फॉर CO2 इज लाइक कूल, बट वाटर इज लाइक कुछ भी करेगा. फैंसी, राइट? या पानी OP. एग्जैक्टली. Somebody is behind me. You can't see, right? Because it's keyed out. I mean, the person is probably green. That'd be like a cool camouflage thing that's happening. Yeah. Gallium. Pani OP. All right. That was a fascinating question. Let's go to the next one. एक और सवाल. Looks like ये session is turning out to be an ionic equilibrium session. खैर, एक और सवाल. ध्यान से करना,
ध्यान से करना. The dissociation constant simple है यार, इसमें कुछ trick विक कुछ नहीं है. The dissociation constant of HA and HB are some value. Okay. What is the pH of a solution which is a mixture of some of this and some of this? I have kept numbers so that मतलब मैंने कुछ fancy नहीं किया है. This is a straightforward thing. थोड़ा simple सा direct सा सवाल है. Just be careful that the difference is when you mix weak acids, उनका K की value plays a role in changing the moles of stuff. ठीक है? Try this out, please. Please try this out. Enough for JEE, Wushang. Enough for JEE. Is that like a meme? I think that sounds like a meme to me. Like enough for JEE. Yeah. All right. Cool. Supernatural is a good show. My friends have been suggesting it for a really long time. मैंने अभी तक देखा नहीं है, shamelessly. So if you guys tell me it's a good show, I'll probably check it out. It's so daunting to start a show that has like 10 seasons in it. Are you guys like active on the chat, or has my chat died out for some reason? Quickly checking. क्या चल रहा है भाई? मुश्किल लग रहा है क्या ये वाला सवाल? Or oh, maybe the chat is dead. YouTube does that at times. It just kills off the chat. So I'm gonna have to see an ad, guys. Oh God. I'm gonna have to see an ad. 2 ads. YouTube is beautiful. 2 ads. खैर बताओ. Active. Okay, good. Thank God. Chat चल रहा है. Okay. Pai Sahab says H plus is 2 and 10 power minus 2. Pai Sahab, थोड़ा log भी तो लगाइए. Treat this as a session where you learn how to use logs. Calculation. Yes. Sir, class ML11 की physical chemistry weak है. बचे हुए टाइम में कैसे स्ट्रॉन्ग करें? पूजन जी, बचे हुए टाइम में तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए. अभी 7 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री क्यों करेंगे? अननेसेसरी टेंशन लेंगे. अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करिए उसमें. अरे भाई साहब, परवीन जी और पूजन जी में वॉर चल रही है. यस परवीन, गुड जॉब. पाई साहब, नाइसली डन. वो कहाँ गया? सुबह कैलकुलेशन दिया था बट अभी तक शाम. पाई ही था. ठीक है, गुड जॉब. So what do you do in this question, right? The straightforward way of doing it, जो चीज you are already familiar with, we'll quickly write it down. ठीक है, इसमें कुछ complicated चीज नहीं है. Spam wars, yeah. Dissociation constant मतलब alpha. Dissociation constant मतलब alpha. यार 22. अब मैं क्या बोलूं यार? Dissociation constant मतलब K यार. Ka को dissociation constant बोलते हैं. आप क्लास 11 के. आई अंडरस्टैंड पूजन. बचे हुए टाइम में तो आराम से करिए. यू आर इन क्लास 11, देन यू गोना बेल्ट इट ब्रो. तुम बचे हुए टाइम देखो यार. सी मोस्ट स्टूडेंट्स हु कम टू मी दीस डेज ना, उनका एग्जाम हो या तो 27 या तो 29. तो आई एम जस्ट ट्यून्ड टू से दैट डायलॉग. लाइक यू नो हाउ इट वर्क्स ना. यू हैव सीन दिस शो कॉल्ड द आईटी क्राउड. लाइक आईटी को कोई कॉल करता है ना, तो यूजुअली सॉल्यूशन होता है हैव यू ट्राइड टर्निंग ऑफ एंड ऑन अगेन. सो यू गेट अ कॉल, यू से कि हां यार ठीक है, यू ट्राइड टर्निंग ऑफ एंड ऑन अगेन. दैट्स व्हाट आई एम लाइक दीस डेज. That was a very bad impression of one of my favorite actors from that show. But anyway, yeah, अच्छी बात है. Zern is like, look at this bro. JEE तक कैसे strong करूं? Read Zoom डाल. Bro, Parveen, thanks for single-handedly increasing the chat rate of this class. But let's बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Parveen, Rakshita, thank you. 1.7. Okay, scrolling up to check what's happening. 22 dissociation constant मतलब Ka. ठीक है? All right, cool. Alpha को क्या बोलेंगे फिर? Dissociation constant मतलब alpha. Let me see. Is it called that? What is dissociation constant? Dissociation constant. Now you're making me confused. See, I'm really bad at remembering stuff. Dissociation constant, alpha or Ka. I'm pretty sure it's Ka. Yeah, dude, it's Ka. Alpha is called degree of dissociation. सोच रहा था कुछ तो बोल रहा था. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा. ठीक है, ये जो अल्फा है ना, इसलिए मैंने अल्फा और बेटा लिखा है. ग्रीक लोग बेटा बोलते हैं, हम लोग बीटा बोलते हैं, देसी लोग बीटा बोलते हैं. जो बोलना है बोलो, बेटा बीटा सब चलेगा. ठीक है, डिग्री इज अल्फा एंड बेटा एंड कांस्टेंट इज के वैल्यू, के ए एंड के वन के टू. ठीक है, तो मैंने अल्फा और बीटा ले लिया यहाँ पे. नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज जब आप H प्लस लिखोगे ना, राइट इट लाइक दिस, C अल्फा प्लस C बीटा. ठीक है, yeah, all right.
That's an L at the end. It's not dahi, it's DHL. You know, like roll dal, zoom dal. Zan, that's a textbook. Zan, yeah, that's a great textbook for physical chemistry. पूजन, like seriously bro, तेरे को पढ़ने के अलावा सब कुछ करना है. तूने आंसर भी नहीं दिया अभी तक. Funny guy, guys. Funny people here. Piyush, what's happening? ठीक है. Shlok, here, degree of dissociation. Okay, after you do this, you need to make sure that in both these expressions, you put C alpha plus C beta. ठीक है? And then you get two equations, two variables. Now इसको जैसे solve करना है आप लोग करो. If you like maths, you like algebra, बहुत simple है. You divide 1 by 2, okay? You will get alpha in terms of beta. Then you substitute in any of these equations. यही तो करना है बस. So that's what I did. I divided alpha by beta. I substituted in this equation. I got the value of beta. And then you get the value of alpha. ठीक है? यही बस करना है. After you do all of this little bit of mathematical jugglery, you get beta is 10 power minus 2. Alpha is 3 beta, which is 3 into 10 power minus 2. So H plus क्या होगा? ऐड करो 2 into 10 power minus 2 जो बिल्कुल शुरुआत में भाई साहब ने बोला था, सॉरी, और pH is 1.7. गुड जॉब. हाँ यार, तेरे को तो हटाना पड़ेगा यार. टाइम आउट करें, भगा ही दे. ठीक है, टाइम आउट. I'm feeling nice today. I'm just giving this guy a time out, not kicking him out. Yeah, Suhani, thanks. I'll remove him. I was just being a little tolerant. I decided, ठीक है यार, Saturday है, थोड़ा chill करो, इसको time pass करना है, करने दो time pass. But if it's distracting you, तुरंत हटा देंगे. The moment you guys don't like anything happening on this chat, tell me. I'll be brutal, bro. You are my top priority. The people who are trying. बाकी लोग तो यार लाइफ में टाइम पास करते रहते हैं, उनका क्या करना है. अगला सवाल देखते हैं. हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया आज के लिए, और नहीं टॉर्चर करूंगा. बट हाउ डज दिस मेक यू फील? मे बी इट्स लाइक, ओ बॉस, मुझे आयोनिक रिवाइज करना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. Focus on first principles, you will be good. That is the moral of the story. ठीक है? 29th को है. King fan, welcome bro. Long time. How do you feel now? Physical chemistry के बारे में. Yeah, थोड़े exceptions वहां पे भी हैं. The most stable shape of ClF3 is shown by what? You've got three different things. Now, अगर आपने NCERT पढ़ी है, you will give me the answer right away. अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है, you'll be like, bro, इसको सवाल को तो छोड़ना पड़ेगा. थर्ड वे, अगर आपने जेडी पढ़ी है और आप में एक हौसला है कि हम कुछ भी कर लेंगे, then maybe we'll solve it. Feeling crazy, भाई साहब? Okay, nice, says 22. Option 1 says Aditya Pandey. Lovely, thank you. Little bit scared after this session. नहीं परवीन यार, परवीन, the focus of this session is to tell you कि you need to focus on first principles. That's the general idea I'm going with. ठीक है? देखो यार, sometimes students think कि just taking a hammer and hacking through things will work in JEE, but I hope it works for you, but it's a risky approach. मैं बोल रहा हूँ, आराम से प्यार से करो चीजें, ठीक है? No hurry in doing things. सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ सीरीज करा दीजिए. सुहानी कराए तो है मैंने. सुहानी, it's all done. Is that open? Hold on, let me just check. I think I have the link of all of these things. Oh man, I don't have the link of that. I'll give you the link of my whatever, I have all the sessions मैंने जो किए हैं. If somebody else has it here, please share it with Suhani while I look for other stuff for you guys to do. कुछ लोग बोल रहे हैं D. I see your options. I mean, I see you guys giving me options. Let me just help Suhani out with an older session that you're looking for. I'm going to give you the playlist of everything that I have, all playlists, everything. उसमें please ढूंढ लेना PYQs में. ठीक है Suhani? That's the best I can do right now in the middle of the session. If you want to chat about this later, we can. But let's focus on what's happening here. And I gotta look at this. Zan is saying D very confidently. Divya, Yash, 22 are all saying 1. Aditya Pandey is also saying 1. Bent T shape. Yeah, bent T shape. King fan is saying B. तो A, B and D इन तीनों में से है ना. तो कुछ लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, इसलिए उनको मालूम है A, राइट? बाकी लोगों ने, और रक्षिता who was in the session in the morning, yeah, you guys are no, okay, ठीक है. और कुछ लोग यार तो ऑब्वियसली D होगा. देख इसमें लोन पेयर देखो कितने दूर है, इतने दूर लोन पेयर, तो ये तो बेस्ट हो गया, कोई रिपल्शन ही नहीं है. ऑसम. तो 3 होना चाहिए. लेट्स सी. Spoiler. Okay, let me read spoiler's point, right? You have a doubt in ionic equilibrium. A minus, there is solution. Will it go on hydrolysis or will it react with H plus and form HA acid? That's a beautiful question.
That's a beautiful question. So देख यार, स्पॉइलर भाई साहब बोल रहे हैं कि A माइनस will it react with water or H plus? Now spoiler, अगर A माइनस सोल्यूशन में है, इट इज देयर अलोंग विद सम काउंटर आयन Na प्लस, वो अकेले नहीं है, ठीक है। और H प्लस पानी से आता है, बट पानी मोस्टली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, यूनियनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, सो इट्स मोस्टली वाटर। इसीलिए दिस रिएक्शन इज अ लॉट मोर लाइकली देन दिस रिएक्शन गोइंग बैक दिस वे, बिकॉज ये बहुत कम है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7, राइट, और वट एवर इट मे बी, बट मैंने पानी में डाला है सिर्फ A माइनस, इसलिए वो पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा। H प्लस बहुत कम है, बहुत ही कम, ठीक है। दैट्स द आइडिया। इफ यू हैव अ कंफ्यूजन अबाउट दैट स्पॉइलर, पिंग मी ऑन टेलीग्राम, या विल टॉक अबाउट दिस एंड मोर। वो तो थ्योरी की बात है थोड़ी सी, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं उसको डिटेल में अभी नहीं क्या बोलते हैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा। पिंग अस ऑन टेलीग्राम, जॉइन दिस ग्रुप। H प्लस है बट बहुत कम, एग्जैक्टली 22, बहुत कम है। All right. Okay, let's get back to this question. A and D are what most of you are saying. Gulam ji is saying 1. Okay, beautiful. So let's do the first principle. I don't care for these guys. I've heard their names. I will not take them out loud. I don't care for them because they're not important. Because J.D. Lee does not use their name. So I will not use their name. It doesn't matter if coaching does. It's not important. Okay. Let's figure this out from first principles. कितना टाइम बाकी है? थोड़ा टाइम है। लोन पेयर रिपल्शन देखते हैं कितने हैं, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखते हैं कितने हैं। What do I mean? If you have 90 degree repulsion, that's bad. That's really bad. 120 degree repulsion is kind of okay, but like 90 degree repulsion is really bad. 90 degree matlab like this, right? This way. 120 is more. Ouch. I have spondylitis. That doesn't help. But 90 is this. So it's pretty close. All right. So कितने हैं यहाँ पे? लोन पेयर 90 degree तो है ही नहीं. Yeah, this is just 120 degrees. 120, 120. I'm going to write them all down actually. यहाँ पे 120, 120 and इसके बीच में 120. यहाँ पे 120, 120, 120. Okay. And the yellow ones are going to show the 90 degree ones. ये हो गया 99. Yellow नहीं. Yeah, yellow. No. 90 degree this way, 90 degree that way, 90, 90, 90. Okay. So lone pair के बीच में 90 degree नहीं है in the first one. So this looks like it's pretty stable. इसमें भी नहीं है. This also looks pretty stable. So 1 and 3 are awesome. 2 is like, bro, 90 degree repulsion lone pair के बीच में, ये तो नहीं होना है. That's not happening, bro. It may look like this is weird, but see, देखो, ये है equatorial, ये है axial. Okay, look at it like this, right? अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो नीचे भी 90 डिग्री होगा ना, है ना? समझ में आ रहा है ना कैसे 90 डिग्री है? थोड़ा विजुअलाइज कर लो. Okay. What about lone pair bond pair? Lone pair bond pair में इंटरेस्टिंग होती है चीजें. See, lone pair bond pair repulsions यहाँ पे है 120 डिग्री times 2. That's okay. But look at 90 डिग्री. भाई 90 डिग्री है एक और दो. Okay, so there are 2 each of lone pair bond pair repulsions of 90 and 120 degrees. 90 degree bad, 120 degree good. Look at this. This one goes crazy. Look at this. इसमें 6 हैं. 6 90 degree के angles है, which is like, oh my god, this was supposed to be the chosen one. This was so awesome. But this is ruled out mainly because these 6 90 degree angles. ठीक है, 6 है. You see how 6 है, right? 3 ऊपर 3 नीचे है. So that's out, and this one is out as well because of this. So only thing that remains is like middle ground. यहाँ देखो 90 into 3 है. कैसे 90 into 3? Let's see quickly. I'll mark that out here. 90 into 3 कैसे? 120 into 2 तो is easy, right? This way and this way. That's 120 into 2. I'm not considering bond pair. वो बाद में देखेंगे. Let's just focus on lone pair bond pair. ठीक है. 90 into 3 कैसे? 1, 2 and 3. Cool. ठीक है. All right. परवीन कुछ बोल रहे हैं. थैंक यू. यस परवीन. ऑलराइट, स्वीट. या समझ में आया? यस, नो, मे बी. Sir likes ionic. So the present of ionic question of ionic is no exception. Shlok says that's funny, guys. That's funny. So from this deduction, थोड़ा ज्यादा हो गया, I understand, but this is the logic, guys. Don't mug ये electronegative element होगा कहीं पे. Don't mug all those random things. Not important. First principle से करो, life will be easier. And एक बार कर लिया तो you'll never forget. This has to be it. क्यों? क्योंकि 90. What is the moral of the story?
Moral is 90 degree, bad. 120 degree, good. And although 3 looks awesome, once you see it has 90 degree into 6, you're like, bro, ये तो नहीं हो रहा, छोड़ दो, let it go. ठीक है? पीयूष यार मुझे मजा नहीं आता है. पीयूष प्रणाम नीट के. यार मेंटीज टाइम पास नो. मुझे पढ़ाने यार, सी इफ आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम and I was able to take a lot of your classes, then I do time pass things. But yeah, I feel like I should focus on finishing things with you syllabus wise. Then maybe we can think of mentee. मेरा personal point of view. But मुझे लग रहा है कि बहुत चीजें already syllabus का ही करना is important. And yeah, and plus to be honest, like I'll stop beating around the bush. यार mentee थोड़ी ना क्लियर करोगे जी. Mentee is good fun between 30 of you doing some competition, मजा आता है. उससे इतना लर्निंग नहीं हो पाती है. मैं आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुली टू यू. हम लोग प्यार से 5 मिनट एक सवाल बात करते हैं. मेंटी में हो ही नहीं पाता है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लाइक पम्प्ड अप, लाइक सवाल करेंगे व्हिच इज ग्रेट. आई वांट टू बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू. ऑलराइट, क्विकली लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मे बी एक और कर लेंगे. लाइकली बॉन्ड एंगल्स ऑफ SF4 मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? 810 117 120 180 45 118 117 92. जल्दी से करते हैं. लेट्स डू दिस. पानी पिया ही नहीं बॉस, 1 घंटा हो गया. दिस क्रेजी. What do you think? क्या होना चाहिए? A says श्लोक. ओके, बाकी लोग? Zan, Pai Sahab are all going with A. Yeah, A or D. 22 wants to be comfortable with A or D. Okay, A or D. Let's think. Okay, cool. Spoilers on A, everyone's on A. Okay, cool. I'm going to do a very weird thing today. I'm going to write down the likely things. ठीक है? क्या हो सकता है? SF4 मतलब क्या होगा? ठीक है, ऐसे हो सकता है. तो I mean, just 2 random structures I've drawn. I don't know which one the answer. Randomly I've drawn 2 structures. ठीक है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड पे 1 लोन पे. ठीक है? तो अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, सम ऑफ इट मे लुक वियर्ड, बट आई पुट 1 लोन पेयर हियर, 1 लोन पेयर, ऐसे ही रैंडमली बनाया मैंने. फ्रॉम दैट सेम लॉजिक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे है 4, विच इज बैड. यहाँ पे है 3, विच इज ओके. दिस बेटर बेटर बेटर. यूं भी लगी भाई ऐसा होता ही नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, क्या होगा ऐसा. आई नो, चिल ब्रो, चिल चिल चिल. राइट, सो लेट अस जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन, लेट अस डू इट लाइक दिस. क्या फर्क पड़ता है? सो वी एलिमिनेटेड बिकॉज में 4 into 90 है. ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर, राइट, जहां हमने इक्वेटोरियल प्लेन में डाल दिया लोन पेयर. इसमें थे 3 into 90. doesn't look very good for this guy. What about this? Oh, this is beautiful. इसमें है 2 into 90 and 2 है 120. देखो, ये है हमारा विनर विनर. 2 into 90, 2 into 120. Hence, ये होना चाहिए तुम्हारा स्ट्रक्चर. सी, we have covered the whole of chemical bonding के structures in the last 10 minutes. खत्म पूरा bonding. उस that's question, and this question finishes the whole of bonding from this point of view, from that VSEPR VBT वाला concept से खत्म. That's all, right? So इन ideas की वजह से यही होना चाहिए. And now the thing is कि okay, now that we have ascertained that this is the right structure, but ये lone pair भाई साहब इन 90 degree angles को push करते हैं. So 90 के बजाय they'll be, you know, little lower. Now what angle? ये एंगल बढ़ जाएगा, वो एंगल कम हो जाएगा. कौन सा एंगल कम हो जाएगा? FSF. FSF angle is 89 degree or whatever you want to call it. ठीक है. और दूसरा कौन सा गया? ये वाला, this I'll use a different color here. जो पीछे जा रहा है, this angle was supposed to be 120 is now 117 degrees. ठीक है, because the lone pair is pushing it that way. ठीक है, all right. नथिंग तुम्हारे लिए नथिंग ही सही है. करो तुम अपना काम. आई एम नॉट इवन गोइंग टू बॉदर म्यूटिंग हिम और इवन टॉकिंग अबाउट हिम. डजंट डिजर्व दैट मच अटेंशन आल्सो. या तुक्का. Zern says tukka. Okay, lovely. Prince, what's happening? Do you guys understand
how this works. Yeah, good job on figuring it out. Yeah, पहले किसने बोला था spoiler सुहानी, Prince. Hey, Suhani. Okay, great. All right, Prince, Zern, Pai, Shlok. I think yeah, Shlok started this off with A. All right, lovely. Good job. Good job. All right, Rakshita doesn't like it. Nothing's gone, bro. That's all I needed. One student to tell me what to do. Bye. Oh, hold on. That doesn't work, huh? Oh, that worked. Now I got it out. Yeah, I'm not used to this moderating and teaching at the same time. Okay, so I'm a little slow at that. But if you point out that somebody is disturbing you, I will remove them right away. All right, sweet. So this is the answer, 89 degrees and 117. Debargya, Mayati ji, yes. Rakshita, it's okay. Don't worry about it. Don't worry about it. In chemical bonding, most questions are like this. Logic तो है उसमें, but logic इतना convoluted है कि sometimes it is easier to remember it. And remembering मतलब logic से करोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा. That's what I mean. ठीक है? Now, like when you try and remember 40 random words as a kid, I don't know if you've done this exercise. मेरे स्कूल में एक कराया था. 40 कोई भी 40 random word कैसे जल्दी से याद करें in 10 minutes. Random words, unrelated words. You form a story between them. You know, we did that in 6th and 7th standard. तो यहाँ पे logic अगर आप actually लगाओगे, you'll be able to remember it. That's what I'm trying to get to, right? So this was the logic behind this in this question and the one before this. I hope that helps. Anyway, if you want to chat more about this question or anything else on Chem, join us on this group. All right. All right. Please don't add G. अरे वो आदत है, वो तो यूपी वाली आदत है. Anyway, ठीक है. I think we're out of time. Do we have some more fun questions? Anything interesting? Oh, ये वाला interesting लग रहा है मुझे. ये वाला interesting है. ठीक है, simple है, but कर लेते हैं. Let's try this one out. Simple है, I feel. Do you want to spend 5-10 more minutes on this? Let's see. अगर एक दो अच्छे सवाल हैं तो कर लेते हैं. Then I'll let you guys go. Assertion: molarity and molality for 10 ppm solution are approximately equal. Reason: for all aqueous solutions, total mass of solvent is approximately equal to total volume of solution. Really? What's happening? Zern, yaar. For me, it's spirituality. That's the answer. But you got to, the easy answer is you've got to do something else, right? To keep your mind occupied. And physical exercise सबसे जरूरी है. So when you're outside the house, थोड़ा घूम के टहल के आओ. Get a free mind so that you can think about what to do with life. I'm not even kidding on this one. If you play a sport, ठीक है, थोड़ा वो खेलो. Freshen up your mind. Physical activity is the first step. Get yourself free to do nothing. Basically that. And उसके बाद whatever works for you. For me, spirituality works. That's why I do the whole Hare Krishna thing and all of that. Anyway, Zam, we can chat on Telegram about this. All right. So Shlok says C. Shlok ने 2 बार बोला C. काफी confident. 22 also is saying C. Debargya is saying D. Okay. Zern is saying A. अरे split vote all over the place. अच्छा. JEE है 29th को Zern. तो this is the best time to fix your routine. मैंने भी जो रैंडम सेशन किया था उसमें जब एडमिट कार्ड कुछ आया था उसमें वही तो बोल रहा था आप लोगों को कि सुबह बहुत जल्दी मत उठो, बहुत लेट भी मत उठो, लाइक 6-7 बजे उठ जाओ ताकि 9 बजे का सेशन हो तो फिगर आउट हो जाएगा, 3 बजे भी फिगर आउट हो जाएगा. यस श्लोक. ओके. पाई साहब सेज डी. अर्पित इज ऑन सी. ओके. अर्पित इज ऑन सी. पाई इज ऑन डी. ओके. So let's define these things. Thanks for this. Yeah. Suhani also says C. Molarity क्या होती है? Moles of solute by volume of solution. Molality with the L is mole of solute by mass of solvent in 1 kilogram. In 1 kilogram. ठीक है. Now the only way in which both of these are equal, अगर इन दोनों का denominator हुआ equal, right? If both of the denominators are equal, very crudely speaking, अगर ये है, then it will be equal. Yeah? अगर दोनों denominator equal हुए तो. दोनों denominator कैसे equal होंगे? If I say that the ratio is 1. Now you see where I'm going with this. Mass of solvent by volume of solution. That could be density अगर solute का volume does not matter. Solute का volume doesn't matter. And that would happen in a very dilute solution. And look at this. 10 part per million मतलब 10
in 10 power 6. This is extremely dilute. So it doesn't matter. And also the density of water happens to be 1 gram per cc. So ये देखो, इसीलिए ये equal हो जाता है. So I prove this is simple math also. And this is not true. It's not for all solutions. It's only for very, very dilute solutions. Very, very dilute solutions. Only in that case. ठीक है? अरे वाह सुहानी, अरे वाह. बट सुहानी, मेरा एक सजेशन है, थोड़ा सो जाओ यार, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इफ यू गेट द आफ्टरनून वाला स्लॉट, एंड दिस इज ओनली, ये बहुत अच्छी हैबिट है, 5 बजे उठना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. I did that a lot in Suratkal. I would get up at like 4:30. I would get ready and by 5:30 मैं बाहर था. I was on the beach. मेरा मेन पॉइंट था सूरतकल में बीच. That was my life. So it's great. लाइफस्टाइल की जरूरत. बट अभी जेई का एग्जाम का ड्रामा ये है ना, जेई का एग्जाम होगा, अगर आपको दिन का शिफ्ट मिल गया 3 बजे वाला, यू हैव टू बी एट योर बेस्ट सेल्फ ना. ऐसा ना हो कि आप 5 बजे उठोगे भाई 6 बजे तक और बर्न आउट, है ना. तो मे बी जस्ट फॉर दीज 5-7 डेज. अरे बाप रे, कोई कॉल कर रहा है. ये वाला फोन साइलेंट करना भूल गए थे. होल्ड ऑन, सॉरी, that was a very loud phone. This phone doesn't usually ring. In a class right now, will call you back. Sorry about that, guys. Apologies. Yeah, if you're a night person, देखो रक्षिता, thank you. Yeah, रक्षिता, ये भी दूसरी चीज है बोलने की, right? If you sleep at 5, that's risky too. अगर आपका एग्जाम सुबह 9 बजे हो गया तो नींद की वजह से, this has happened to me. This has actually happened to me. I kid you not. First time in my life and the only time it happened. उसके बाद I kind of fixed it. Like मैं कॉलेज में मैथ्स एग्जाम में जाके सो गया था. And this is a first semester exam. I slept. I was okay at studies, right? I did not fail or anything. That didn't happen. But I was incredibly sleepy. And that's because Bangalore mein, I also went to Bangalore, right? I dropped out of RV. I've dropped out of Surat, went to RV. Anyway, so Bangalore में बस like 2 घंटा like a picnic जाते थे केआरपुरम से RV कॉलेज जो है भाई मैसूर रोड पे, 2 hour whatever. I would get up early. And exam था दिन में 2 बजे. And this happened to me. I literally like 1.5 घंटे बाद I slept for like half an hour in an exam. My teacher like, bro, सब ठीक है? I'm like, हाँ भाई मुझे नींद आ रही, मैं सो गया. Then I got up and restarted the paper. So I hope it doesn't happen to you. Because I honestly didn't care. मेरा like मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है, ठीक है. And I know that you guys are not going to be this carefree अगर it happens to you because it's a JEE main का exam. And I don't want you to face this. इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई sleep routine fix कर लो. ये सब छोड़ो यार, physical chemistry, inorganic, सब छोड़ो. तुम पहले routine ठीक करो. In the next 7, 8, 9 days, your main job is to fix your routine. If you want me to tell you that daily on the Telegram, I'm like, हाँ भाई कितना बजे सो, अलार्म लगाओ क्या? Do that, please. Yeah. Paper दिख नहीं रक्षिता, that's what you think. But after a point, right, you burn out. And if you burn out, then you're like, भाई सब जाओ, मुझे भी सोना है. Yeah, ठीक है. And anyway, where am I from? Srinidhi. I'm in Bangalore right now. Been in Bangalore for a long time. Assertion, yes. Assertion will be true only for water. Yes, absolutely right. Thank you. Solvent is water. I love this guy, man. What is the detail this person is going to? This only works if the solvent is water. Absolutely right. Absolutely right. 22. There was a book, right? Hitchhiker's Guide to the Galaxy. So bolte hain, what is the most important question in the world? And he would say the answer is 42. That reminds me of this 22. Anyway, Sanskar saying 8. I have no idea what you're talking about, bro. 8. Okay, cool. और कुछ है क्या? और कुछ है? Let me see. Let's do one last question. एक last सवाल करें. एक last सवाल. Must be a good question. Too much pressure. Okay. I think it's been a long time. We haven't done anything from coordination chemistry. So let's do that. Coordination के 1-2 सवाल करते हैं. That's it. I swear to you. We're done. Coordination. And then we're done. We're done. We are assuming. Yes, Debarga. Yes, you're right. You're right. Yeah. English board exam, you slept for 20 minutes light. Samyak. Bangies, man. Bangaloreans have too much chill. That's true. Which one of the following has a square planar geometry? बहुत simple, straightforward सा सवाल है. अगर मालूम है तो, अगर मालूम नहीं है तो बहुत randomly you would start thinking too much. To try this question out. Organic, sir. Hi Raja, how is it going? You're from V. Where is V? West Bengal? E? No. What is WE? West Bengal. I guess that right. Okay. Bro, Bengali food out of this world.
Bagan bhaja, man. I got some insane bagan bhaja during Durga Puja from this restaurant here in BTM. Which of the following has a square planar geometry? You got four things here, right? Nickel, platinum, cobalt, and iron. Now, interestingly, platinum nickel वाले ही ग्रुप में है, right? Nickel के नीचे आता है palladium, उसके नीचे आता है platinum. I can show you that quickly on the periodic table if you guys want. अरे कहाँ गया यार periodic table? बंद कर दिया मैंने. No. Oh, here it is. Where is the periodic table? निकल कहाँ गया? देखो निकल पैलेडियम प्लैटिनम, निकल पैलेडियम प्लैटिनम. Hey, you've seen it. अगर नहीं मालूम था ऑलरेडी तो cool. What's happening on this one? B. Shlok. Arav. Pi. All right. All. Ninja Sahab is also saying B. Easy one, right? देखो, all of these are weak field ligands. But this guy, 4D and 5D, right? High Z effective. Mug. इसकी वजह से ये होगा inner orbital complex. ठीक है? And hence, it will cause pairing. You will have all of those extra things. Like, इसी same idea में you can ask 2-3 questions. Here's another one, right? This one's done. सही बात है. Very good. Good job. जल्दी से आपने कर लिया. एक और इसी same ideas में कर सकते हैं सवाल. चलो, one more question. Same idea. Exact same idea. Last one for the day. The magnetic properties of PdCl42- and NiCl42- respectively are. You got 4 options. I think you will do this in 30 seconds. Last वाला के तो तुरंत कर लोगे. Timer 30 seconds. Sure thing. Thank you. Like people are like, भाई आपने खाना क्यों नहीं ऑर्डर किया अभी तक? It was great. बहुत बढ़िया था. I mean, you know, you order food too much when the guy who made your pizza asks you, sir, आज का खाना कैसा था? Lovely guy, Mahesh. The place called Rasoya Street. I'm giving them free publicity. Brilliant pizzas, bro. You're from Gulbarga? Yeah. Oh, shoot. 30 seconds, guys. Answer कहाँ है? Answer कहाँ है? Suhani saying B for this one or last one? Okay. लगता है इस वाले का भी B है. I'm good, Raja. I'm good. B, D2SP. Suhani saying scary things I have no idea about. B, okay. 22 saying 2. Shlok is also saying this. Yeah. Absolutely. Why? Because, again, just like the last one, यहाँ पे होती है pairing और इसमें pairing नहीं होती है. ठीक है? Again, you've got a weak field ligand, but because of the high Z effective charge, like pull electrons in, blah, blah, blah. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ये होगा Ni2 plus का, ये होगा Pd2 plus का, and this is diamagnetic, this is paramagnetic. So, I hope for your sake, you guys get such direct questions in your JEE exam. It will be beautiful if that happens because सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will just mark it and you'll move on. But in the off chance that does not happen, I told you it was the last question, but this is definitely the last one. Pinky swear. ये वाला actually मैं last है. Because I think next I'll meet you on Monday with the mock test and all ना. तो तब तक एक last सवाल कर लेते हैं. Let me scroll down. A lot of you guys saying so many things. हमने 2020 में क्लास 12 एडमिशन कराया. सॉरी यार मनीष, आपकी बात में थोड़ा समझ नहीं पाया. थोड़ी मुश्किल से आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है. सॉरी. Saturated carbon has stronger bond or triple bond is stronger. Saturated, unsaturated, saturated, unsaturated, saturated, unsaturated. See, the concept of strong or weak. Now, you're talking about energy. Energy-wise, triple bond is stronger, but triple bond is more reactive. There's also that. So, stronger का concept, what do you mean? Anyway, हाँ, blur ठीक कर दिया. इसका बताओ आंसर. PD you can't understand, देबर गया. PD and PT are the same, no? PD and PT are both DH species and both of them have a high Z effective, and hence even with weak field ligands they will cause pairing to happen. ठीक है, ये coordination की basic theory है, पढ़ लेना. ठीक है, if you have some doubts ping me here, we'll figure it out. All right, when you give the right answer, मेरा chat that's a funny problem to have, right? हम आंसर दे रहे हैं but आंसर आ नहीं रहा है. पता नहीं यार, YouTube is behaving weird. सुबह it was happening with somebody else, होता है neat folks. Anyway, इसका आंसर क्या है? सब लोग बोल रहे हैं A. देबरगिया saying C. Okay. देबरगिया, अच्छा इसमें थोड़ा diversion है. 22 saying A. Shlok is on A. Arav is saying A. King Fan is B. Ninja is A. 210 is a great score, bro. Kavita. Ninja saying A. Spoiler is also on A. Pai Saab is on A. Raja is also on A. बहुत लोग बोल रहे हैं.
बस एक बेचारा बोल रहा है समथिंग एल्स। ओके, देखते हैं क्या करें इसको। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, चक्कर ये है ना, सबसे ज्यादा होगा फॉस्फोरस का फॉर श्योर, बिकॉज दैट इज अ P3 कॉन्फ़िगरेशन। अब बाकी नेक्स्ट में क्या होगा यार, हाउ डू यू डू दिस? ओके, लेट्स सी। मैग्नीशियम, हाँ यस, मैग्नीशियम विल बी मोर देन एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये S2 है, ये S2P1 होगा, राइट? एल्यूमिनियम इज व्हाट? लेट्स गो दैट सी दैट। यू लाइक ओ माय गॉड, इसको एल्यूमिनियम ही मालूम है। इट्स ओके ब्रो, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। एल्यूमिनियम 283, 283, 2821 ना, 283 मतलब 2821 ना, तो एल्यूमिनियम इज P1। ओके, सिलिकॉन इज P2, P3, P4, P5। ओके, स्वीट स्वीट। व्हाट प्रॉपर्टी वर वी लुकिंग एट? कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग? देख रहे थे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हियर यू गो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? बी तो गया, बी तो गया। Magnesium is 737, aluminum is 500. Look at how low aluminum is. There's a massive jump between magnesium and aluminum. And silicon is crazy close by. Phosphorus is so high, 1000 हो गया, sulfur का 1000, sorry 1100 हो गया, 1011 हो गया, and sulfur then falls off। ठीक है, तो phosphorus is highest, then sulfur, उसके बाद aluminium, मतलब aluminium सबसे कम होगा, उसके बाद magnesium, right? That's the way the cookie crumbles in this one. I know theoretical सवाल था, अब क्या करें? Yeah, I wanted to end this off on a light note. हमने काफी भारी भारी सवाल भी किए। 22, that's I teach Chem. Yeah, easy to remember. That's me, and this is the group that has JEE folks on it. ये JEE वाला दे रहा हूँ आप लोगों को, or did I give you guys the NEET one? I'm not sure. I think this is the JEE one. All right, cool. I run a NEET thing also because I teach both things. Anyway, cool. All right. Good job, everybody. This is the answer. थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। मैं आपसे मिलूंगा मंडे को मॉक टेस्ट के डिस्कशन में, राइट? वी डिड अ मॉक टेस्ट ऑन द 18th, मोस्ट लाइकली उसके बाद ही हम लोग एक बार मिलेंगे आपकी जेई से पहले। एंड एज यूजुअल, यू नो हाउ इट इज, राइट? जेई के समय आप लोग की भागदौड़, आप लोग की बहुत ज्यादा भागदौड़, द मोमेंट इट कम्स आउट विल डू द होल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ऑल दैट, वो सब शेनानिगन्स विल गो ऑन। ठीक है, ऑल राइट। यू हैव लर्न द ग्राफ ऑफ IE एंड EA फॉर सम एलिमेंट्स। वेरी नाइस कविता। यू होप इट्स अ गुड आइडिया। जो मैंने करो कविता, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास है। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू कि ये सही है ये गलत है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्टफ। इट्स ओके, जो मन में आता है आराम से पढ़ो। Rakshita, like one more question. Join me, alright? Piyush, I'll let you in, bro. Thank you. One more question. You're NEET aspirant. Okay, Debargya, we'll chat on the NEET channel. There's a NEET one also that I maintain. A lot of people here are on the NEET one. This is the new NEET one. You guys can join this. Yeah, dude, of course you can. Spoiler. The best part about a group is there are around 40 students here. It's a closed group, right? I don't like spam. So it's not a channel where 1000 log honge. It's not that. And the students are beautiful. So they help each other out. Yeah, if I can't help you, I'm sleeping or something, you guys ask some random time, you guys help each other out. It's awesome. Last minute motivation is chilling and tips are all session में. It will be fun. Okay. Yeah, मेरा last minute motivation ये है कि भाई घूमो फिरो ऐश करो और क्या है. Really, that's great to know, Srinidhi. I have a really close friend जिनका नाम Srinidhi है. He is one of the nicest persons I know. वो मेरा बैचमेट था कॉलेज में. Excellent guy, Srinidhi Adiga, lovely person. So yeah, I was going to ask you if you're from here. He's from Dakshin Karnataka. Anyway, Kavita's canon event is yet to come. सुहानी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को करा दीजिए। सुहानी, उस मैंने कराया है। सुहानी, वी हैव डन अ लॉट ऑफ दोस क्वेश्चंस, कलर और वो सब हमने किए हैं सवाल। चेक दिस आउट सुहानी, ऑन बोथ नीट एंड जेई चैनल्स ये किया है मैंने। चेक, यू कैन चेक दोस आउट। ठीक है, PYQs है, सब कुछ है, यू कैन चेक इट आउट ऑन दिस प्लेलिस्ट, यू कैन जस्ट नेविगेट थ्रू इट। यस, स्पॉइलर, I'll have to let you in. You're also in Bangalore. Come and teach me. Kavita, हम लोग तो आपको पढ़ा ही रहे हैं. I am teaching you. I'm teaching everybody here. I'm teaching everybody over here. NEET में I think someone has joined. 3 requests. Yeah. I've added everybody who has asked for it. Yeah. All right. चलो, ठीक है. प्रणाम. Thank you so much for joining in. मैंने बहुत टाइम आपका लगा दिया. I went way over time. What's the sheet? Debargya, this sheet is a list of all the sessions that I am working on. I'll keep updating it ताकि आपको एक जगह मेरा सारा कंटेंट मिल जाए। बिकॉज आई टीच ऑन बोथ द जेईई एंड द नीट चैनल ना, तो इसलिए मैंने जो है सब कुछ साथ में एक जगह डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बिकॉज आई फाउंड आउट टुडे देयर आर लॉट ऑफ यू हु गिव जेईई एंड नीट, तो आप लोग बहुत महान हो। और वो जी सेशन में भी यही पता चला कि बहुत लोग दोनों कर रहे हैं। द श्रीनिधि आई नो इज द गाय
but it's a common name. Yeah, it could be a guy or a girl. Anyway, thank you. Thank you. Pranam. मिलते हैं हम लोग मंडे को. Bye. Good evening and have an awesome weekend. Bye bye. See you.